किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ। सुने कौन मेरी ये दास्तां, कोई हम नशी है नाराज़दां। जो था झूठ वो बना सच यहाँ, नहीं खोली मैंने मगर जुबान। मेरी जात ज़र्रा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू 8 PM विद फरीहा इदरीस। आज से ठीक 11 साल पहले ये बात बरमला कही जाती है कि दुनिया ही बदल गई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर यूनाइटेड स्टेट्स में जो हमला हुआ उसके बाद न सिर्फ मुसलमानों के लिए एक नया चैलेंज था दुनिया में, बल्कि पूरी दुनिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक जंग का आगाज किया और पाकिस्तान उस जंग का हिस्सा बना, उसका साथी बना। बहुत से लोग कहते हैं ये फैसला गलत था, बहुत से लोग कहते हैं इस फैसले के ऊपर अब नजरसानी की जरूरत है, मगर हकीकत ये है कि हमने इस जंग में अमेरिका का साथ दिया और चाहे गलत किया या बुरा किया, हमने इसमें बेपनाह कुर्बानी दी। इतनी कुर्बानी कि हमारे लोगों का खून बहा, हमारे मुल्क को बेतहाशा नुकसान हुआ और इन्हीं कुर्बानियों में से एक कुर्बानी, एक माँ की कुर्बानी। आफिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जो पाकिस्तान की एक इंतहाई पढ़ी लिखी, इंतहाई इंटेलिजेंट खातून थी, उनकी कहानी जो आज तक सॉल्व ही नहीं हो सकी। बहुत शोर बचा, बहुत सी सियासी जमातों ने आवाजें उठाई, हुकूमत ने आवाज उठाई। वजीर आजम पाकिस्तान, जब आपको याद होगा उन्होंने ये बयान दिया था तो हमने एक प्रोग्राम लाइव प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर से भी किया था, जब उन्होंने कहा था कि आफिया सिद्दीकी इस कौम की बेटी हैं। अगर वजीर आजम ने ये बात कह दी तो डेमोक्रेसी का एहतराम करने वाले लोगों को, और जिनमें मैं भी शामिल हूँ, ये बात मानी थी कि यकीनन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि आफिया सिद्दीकी कौम की बेटी है तो वो कौम की बेटी हैं। मगर क्या कौम की बेटियों के साथ ऐसा सलूक होता है? क्या ऐसा ही होता रहेगा कि रेमंड डेविस तो रहा कर दिया जाएगा मगर आफिया सिद्दीकी के बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा? सामने कुछ हो, ऑफ रिकॉर्ड हमें कोई और बातें बताई जाएंगी। वही जमातें जो खुलकर आफिया सिद्दीकी की हिमायत करेंगी, बाद में कुछ ऐसे अल्फाज कह के उनके कुछ लोग ऑफ रिकॉर्ड हमें कह देंगे कि शायद आफिया सिद्दीकी तो थी ही दहशतगर्द। मगर बात हो रही है उस केस की। आज 11 सितंबर के दिन मैं कराची में मौजूद हूँ। इंतहाई अहम पैनल मेरे साथ मौजूद है, एक्सक्लूसिवली वक्त न्यूज पर। सबसे पहले ये लोग आज ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से यहाँ पर आए हैं और हम उनसे जानेंगे कि अमेरिका में आफिया सिद्दीकी की कहानी कैसे सुनी जाती है और पाकिस्तान की कहानी को वो कैसे देखते हैं। A very very warm welcome to Tina Foster, Director International Justice Network and your attorney for Aafia Siddique as well, the person she chose to be her attorney. We've also got Senator Mike Gravel. You said it's a French name. Very warm welcome. You're an American senator and you've spoken for Aafia very vocally. A very warm welcome to you. Sitting next, डॉक्टर फौजी सिद्दीकी, किस तारुफ की मोहताज नहीं है। इस सारी मूवमेंट को सबसे ज्यादा आपने ही आवाज दी है। प्रोग्राम आधा हम अंग्रेजी में करेंगे मगर साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको भी समझ, जिन लोगों को जरा ज्यादा कन्वीनियंट है उर्दू में, तो उसकी साथ साथ हम ट्रांसलेशन भी करते चले जाएं। आई अपोलोजाइज दैट some parts will be in Urdu. If you don't understand, you can ask me and I'll try to make you understand as well. Senator, what do you think about this case? I think it's a very, very important case of justice. Dr. Siddique got wrapped up into a terrible situation as a result of the panic within the United States over 9/11 and where we started this war on terror. Well, there's no such thing as a war on terror. Terror are the activities of extremists. And of course, Dr. Siddique no way was involved in anything of an extreme violent nature. Here is a person who literally is genius level intelligence, and because of a husband who was abusive, and he was the one that was first interviewed by the FBI, and after that interview, then Dr. Siddique was interviewed
by the FBI, and the focus of attention shifted from her husband to Dr. Siddique. Right. And then what went on after that was, of course, the kidnapping from Pakistan of a Pakistani citizen by your intelligence community or whatever, with the American intelligence community, CIA. And she was spirited to a location where we haven't seen her for 5 years, and her children were not available. Now, what the situation we have today is, and coming in from the airport, and I saw the reaction of the people here in Karachi with respect to Dr. Siddique, and also the reaction of people in Ireland and South Africa. You're talking about a global movement on the order of what freed Nelson Mandela. Right. And what I was telling to the people on the street was, they are making it possible for Dr. Siddique to be freed from the shackles and the injustice that took place in the United States of America. You believe that? You Totally. think people are vocal Because enough? what You think people happened- have that strength to bring her back? Yes, because you see, what happens is politicians need a climate within which to act. Right. And what we've had thus far in Pakistan is a lack of action. We've had one instance where I think it's Minister Malik of Interior, Yes. who was able to use his influence and power to bring back to Pakistan Dr. Siddique's children. Right. Now, Right. the job is half done. He has got to step forward now and assert the courage and the leadership to now push the United States. And that's what needs to happen. This is not going to happen voluntarily from the United States of America. Dr. Siddique is not that well known in the United States. She is within the Muslim community, but not within the broad community. So the voice has to come from here to be For heard. the over request, there. the push to shame the United States into repatriating her has to come from Very important statement you gave. I want my viewers to understand that as well. रहमान मलिक साहब इंटीरियर मिनिस्टर, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है, उनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है सेनेटर साहब ने। वो ये कहते हैं कि उन्हीं की काविशें थी कि आफिया सिद्दीकी के बच्चे वापस आ सके। अगर वो चाहें तो ये तमाम कुव्वत वहाँ से उठाई जाएगी, और यकीनन रहमान मलिक साहब के पास वो ताकत है कि वो आफिया सिद्दीकी को वापस ले आए। ये सेनेटर ग्रेवेल का कहना है। टीना, what he said is very interesting. He said you can say sort of a collateral damage, or as he said, people panicked after the war, and they usually do in wars. But this case under which she got 86 years came quite a few years after the war. What happened there? Well, I mean, I think that how this began is similar to, I mean, it's a familiar story that we know all too well in the human rights community about what happens to people who get on the U.S. government's radar. And someone, there's What plenty happens? of Tell us what happens you know, when you get on if US you get government's on radar. U.S. government's radar, the U.S. government after 9/11 cast an extremely wide net. They weren't looking for the big fishes. Osama bin Laden wasn't the operation That's what I for was him going to for ask. so They weren't many looking for years. Osama bin Laden. They were looking for everyone, anyone and everyone. What they did is they cast a wide net and they said, we don't care if we have 10 innocent people in prison. If it means that potentially one of those people might give us some piece of information, whether they're guilty or not, they might have some information that would be useful. So For we're an going example, to Guantanamo Bay. Exactly. So you see in Guantanamo Bay, in Bagram, and there are dozens of Pakistanis still lingering in Bagram prison in Afghanistan, where we see innocent people who, even in many cases, the U.S. government admits that they didn't have any evidence to hold, not being returned, not being repatriated, because simply it's too politically costly for them to do anything about it. No politician in the United States has really stepped up to free the victims of the injustice after 9/11. Dr. Siddique is one of those victims, and she is obviously somebody who has suffered not just an insignificant injustice. I mean, for 10 years, her children have also been denied the opportunity to know their mother. They're growing up without their mother now, and this travesty could be addressed. It's a solvable problem, and in fact, everyone
from all political parties has pledged support in a moral way, with words, with promises, but we need actions. And the United States government isn't going to just respond to a polite request. What they need to hear is that there are But have they even got a polite request? Because well, not that we know. Didn't even get a polite We request. don't Think they got even No, they polite did not request. get an official request. There's been no official request from Pakistan asking for her repatriation. That's The alarming. only thing that's been done is her as an attorney representing and trying to bring some facts to public view. But I want to, I'll come back to your point, but one thing that you said was very interesting. You mentioned Guantanamo Bay, if you remember, because you've contested against President Obama in 2008, and that's yes. very interesting. I want my viewers to know that as well, that Senator has contested against President Obama, who's now President Obama. He wasn't at that time, of course. He spoke a lot about the war on terror. He knew where the tide was going, and one of the things he said was that he will shut down Guantanamo Bay. What happened afterwards? Do the American people do not want that to shut down? Of course they want it shut down, but let me say this. I say this as an American, and I love my country, but I'm ashamed of my country, and I'm ashamed of the actions of President Obama. Not only did he fault Guantanamo Bay and didn't keep his promise, but there's a whole host. President Obama has spent 5 times more prosecutions of whistleblowers and leakers than has any other president in our history. And he campaigned on transparency and making society open. So it's going to be very difficult, but it does make sense for him. He wants to run for re-election. He needs, and it's a close election. It would be very wise politically for him to let her be repatriated to Pakistan. Because it's the election year. That's right. It would make good sense for him. Now, whether this can be brought to his attention, but if we can get Pakistan to lodge a formal, serious request, then I think many of us can push on the political side, make sure it's brought up in debates, that what about the injustice done to Dr. Siddique, because she was not tried on anything to do with terror. Yes, yes. It was, All and when you look at the facts, a normal human being would have to say that this was unbelievable perjury by these 5, 6 military men that were in the same room with a 90-pound woman. Yes. I mean, and they're claiming that she was a threat to any one of their lives. This is patently ridiculous. You said it's openly ridiculous what happened, but I have to ask this very important question which sounds equally ridiculous. और मुझे उर्दू में बात करनी चाहिए, वो ये कि रहमान मलिक साहब के ऊपर अगर कहा जाता है कि उन्हें आता है या वो ये काम कर सकते हैं, तो हमारी हुकूमत की तरफ से रिक्वेस्ट जाएगी तो काम होगा। मेरे साथ बैठी हुई डॉक्टर फौजी सिद्दीकी, वक्त के बाद सवाल ये होगा कि इतनी आवाज उठाने के बावजूद पाकिस्तान की सीरियस सियासी जमातें भी शामिल हुई, तो क्या वजह है कि आज तक कोई प्रॉपर रिक्वेस्ट क्यों नहीं जा सकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कि हमें आफिया सिद्दीकी को वापस लाना है? जब वजीर आजम कहते हैं कि कौम की बेटी है, तो कौम की बेटी को वापस लाने के लिए बोलें तो सही। हम ये पूछेंगे वक्त के बाद। हमारा ब्लॉग है फेसबुक के ऊपर, आप वहां पर अपने कॉमेंट्स डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए भेज सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक कराऊंगी इन आफिया सिद्दीकी लाइव आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग 8 PM with Fareeha Idrees। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद है अमेरिकन सेनेटर माइक ग्रेवेल, टीना फॉस्टर जो आफिया सिद्दीकी की लॉयर है, और उनकी हमशीरा। बड़ी अहम बातें हुई, मेन पॉइंट्स मैं आपको बताती चलूं। हमारी हुकूमत के हाथ में है, अगर वो प्रॉपरली चाहें तो कोई हैरत अंगेज बात नहीं होगी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वापस आ सकें। सेनेटर साहब का कहना है कि इलेक्शन ईयर है, ये ऐसा मौका है जिसको कैश कराया जा सकता है। हमारी हुकूमत को भी इसका फायदा होगा, और अमेरिका में भी क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं उनको भी इसका फायदा होगा। मगर साथ ही साथ उनका कहना यह भी था कि वो इस बात पे शर्मिंदा हैं कि प्रेसिडेंट ओबामा वादा करने के बावजूद अभी तक गुआंतानामो बे को बंद नहीं कर सके, और भी बहुत सारी बातें हो रही है। फौजी सिद्दीकी साहबा खुलकर दोनों साहबान का कहना यह है कि
कि हमारी हुकूमत कहेगी तो वो छोड़ेंगे, वो लोग तो नहीं आवाज उठाएंगे कि डॉक्टर आफिया को छोड़े। तो क्या वजह है? आप इतनी आपने आवाज उठाई, इतने इवेंट्स आपने किए, आपके साथ लोग हैं, इनकी आवाज काफी नहीं है? मेरे ख्याल से आवाज तो जाती है, चूंकि जब भी आवाज उठाते हैं हम तो ये फौरन बुलाते हैं मुझे और वायदा करते हैं और कहते हैं कि बस अभी हो जाएगा, और सब बिठाते हैं और इज्जत भी करते हैं और आंसू भी मेरे साथ बहाते हैं और कहते हैं बिल्कुल हमारी बहन है, हमारी बेटी है और हम ये करेंगे। लेकिन फिर पता चलता है, जब भी पूछूं मैं यकीन कर लेती हूँ और फिर पता चलता है कि नहीं, वो खत फिर भी नहीं गया। एक खत का सवाल है, कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है। आपके ख्याल से इसमें तो मांग रहे हैं, खत की बात हो रही है, इसमें अदलिया का कोई रोल हो सकता है? एक खत के ऊपर अगर कहा जा सकता है, इस खत के ऊपर कहा जा सकता है, सो मोटो लिया जा सकता है, लिखवाएं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसमें वकला ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि चीफ जस्टिस साहब इससे बहुत छोटी छोटी चीजों पे उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया है, और वो इसमें तो वो गवर्नमेंट को तो कह ही सकते हैं कि भाई ये खत है, ये लिखने में। लेकिन आपका क्या ख्याल है, ये ड्रोन अटैक्स वाली बात हो रही है कि एक तरफ आके अफसरदगी का इजहार भी कर दो, दूसरी तरफ ड्रोन अटैक्स भी जारी हैं, क्या यही हो रहा है आफिया सिद्दीकी के केस में? हम लगता कभी बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल इसी तरह लगता है कि दोनों को एक पता नहीं एक सियासी किसी उसकी नजर कर दिया है, बिल्कुल एक तरह से उसी तरह जिस तरह गुंतानामो पे एक स्लोगन था इलेक्शन का, जीत तो लिया इलेक्शन लेकिन वो बंद नहीं करना था, इसी तरह और ये ड्रोन्स को एक स्लोगन बना लेंगे, उसके नाम पे जीत भी लेंगे लेकिन होगा कुछ भी नहीं। तो ये सारा ये इन चीज़ों का वक्त नहीं है, वक्त काम का है। मैं तो ये कहती हूँ कि वोट लेने से पहले आप आफिया को ला के दिखाएं, कम से कम आवाम छू तो सकती है ना, वो एड और वो तो नजर नहीं आती ना, लेकिन आफिया आएगी तो आवाम देख सकती है। कहते हैं लोगों की वो टाइड नजर आई, कुछ सी दैट पीपल वांट हर बैक, हमारे सियासतदानों को नहीं नजर आती? वो बिल्कुल आती है, अगर नहीं आती होती तो मुझसे वो क्यों मिलते? फारूक सत्तार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े बहुत बहुत वार्म वेलकम। फारूक सत्तार साहब मुतहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर लीडर हैं। हम बात यही कर रहे हैं, फारूक सत्तार साहब मेरे साथ इस वक्त सेनेटर माइक ग्रेवेल भी मौजूद हैं। वो कहते हैं पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि आफिया सिद्दीकी आए, अमेरिका भी शायद दे दे आफिया सिद्दीकी को, हो सकता है ये मुमकिन है, मगर हमारी हुकूमत ही इस मामले में सुस्त नजर आती है। मेरे ख्याल में अब ये इस बात का तयन हो गया है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से बाकायदा दरख्वास्त दी जाए और इस मामले की अहमियत से आगाह किया जाए अमेरिकी हुकूमत और इंतजामिया को, और उनके साथ खुलकर बात की जाए, तो मेरे ख्याल में अब उनके यहाँ भी ये मोबिलाइजेशन हो रही है, उनके सियासी हलकों में, उनके पार्लिमानी हलकों में, और वो भी ये महसूस कर रहे हैं कि आफिया सिद्दीकी के साथ ज्यादती हुई थी, आफिया सिद्दीकी के साथ नाइंसाफी हुई थी, जो कि एक अरसे से पाकिस्तान में कुछ सियासी जमातें भी और कुछ लोग जो है वो बहुत कोई लगी लगती बात नहीं करे, बल्कि खुल के ये कह रहे हैं कि वो कौम की बेटी है और उसके साथ ज्यादती हुई है। और जाहिर है कि एक तो जिस तरह वो यहाँ से जो है वो लापता हुई या उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया बगैर अनऑफिशियली, यानी गैर जो है वो सरकारी तौर पर गिरफ्तार किया गया था, इतने अच्छे कहाँ रखा गया, अचानक वो अफगानिस्तान में मिली। फिर वो मुकदमा उन पर जो वो शकुक और शुबात थे कि कुछ इंतहा पसंदों से उनके रास्ते हो सकते हैं, वो कभी मुकदमा नहीं चला। वो इल्जाम कभी भी अमेरिकी अदालत में भी नहीं सामने आया। गोया कि वो अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अमेरिकियों ने करनी थी वो कर ली, उस पर वो शायद मुतमईन भी है कि आफिया सिद्दीकी का कोई किसी से ऐसा कनेक्शन नहीं है। लेकिन फिर अचानक अफगानिस्तान की किसी जेल में एक वाकया होता है कि किसी फौजी की बंदूक छीन कर जो है वो उसी को मारने की कोशिश की। अब उसके भी मुस्तनद गवाह आपको कहाँ से मिलेंगे? जेल के अंदर तो या तो अफगानिस्तान की हुकूमत के अहलकार होंगे या अमेरिका की हुकूमत के अहलकार होंगे। तो क्या ये सिर्फ आसिया की गिरफ्तारी को जस्टिफाई करने के लिए ये मुकदमा नहीं बनाया गया? देखिए बहुत सारे बड़े झोल हैं जो इल्जामात लगाए जाते हैं और जो मुकदमा चला है और फिर जो उसकी सजा दी गई वो तो इंतहाई इंसानियत सोचती। लेकिन फारूक सत्तार साहब, उसमें अहम सवाल ये, आप लोगों ने तो बहुत बड़ी रैली निकाली थी,
शोर भी उठाया था एक सर्टेन वक्त में, मगर लोग कहते हैं उसके बाद MQM भूल गई, फिर कुछ नहीं हुआ। आपने इंटरनेशनल फोरम पे आवाज नहीं उठाई, उसको फॉलो अप नहीं किया, इसकी क्या वजह है? नहीं, इंटरनेशनल फोरम पे जो मैं अमेरिका जहां भी गया, मेरी जब भी अमेरिकी इंतजामिया के लोगों से मुलाकात हुई, उनके पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात हुई, हमने आफिया का वहां पर केस रखा। राइट। जो उनके यहाँ सिफारतकार हैं उनके सामने बात हुई, जो विजिटिंग पार्लियामेंटेरियन से उनसे बात होती थी, तो उनको खुल के जाके देखे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत सारी वजूहात की बिना पर आजमाइश की सख्त घड़ी से गुजर रहे हैं। और उसमें ये आफिया सिद्दीकी का भी एक सिंगुलर मसला, एक वाहिद ऐसा मसला है जो कि फौरी तौर पर कम अज कम पाकिस्तान के अवाम में जो अमरीकी पॉलिसी से मुताल्लिक गलत फहमियां हैं, जो शिकवा है या नाराजगी है, वो सब दूर हो सकती है अगर ये काम किया जाए। ये बड़ी अहम बात आपने की है। मैं चाहूंगी इस पे यहाँ पे सेनेटर साहब से भी इसके ऊपर रोशनी डलवाओ। मेरे साथ रहेगा फारूक सितार साहब। Senator, we've got Fareeha Idrees here. He is a senior member of Muttahida Qawmi Movement. That's also a very important party, a political party in Pakistan. He says people in United States देखें mistakes. That's including simple. you. Well, You're a no, politician. I've admitted a lot of mistakes. Okay, but generally. But generally, no, because you see, if they admit a mistake, they use it against them in the campaign, and so they've made a mistake. They've created an unbelievable injustice with respect to what's happened to Dr. Siddique. Now, let me show you, point out how ridiculous this has come. I didn't realize until I came here to Karachi today that there are people, legitimate people, who think that Dr. Siddique is an American citizen. Yes, because our former president also said that. Pardon me? President Musharraf at some point also thought that well, first off, he's American uninformed, and if she were an American citizen, this would be a major cause célèbre with the American people, which it is not. It is with certain progressives in the peace movement and the justice movement, but it's not generally accepted by the broad public. Right. And so there's no motivation. But for people in Pakistan to say that she's an American citizen is ridiculous. She's a Pakistani citizen who was kidnapped and complicit with Pakistani leadership and taken by the Americans, and now we're 10 years on in this great and horrible injustice to this individual who had so much to contribute to life and with her skills. She's literally a scholarly genius in her field. So there's still so much misinformation about this case. That's in Pakistan also. Even in Pakistan. Even in Pakistan, because I didn't realize that they were saying she's an American citizen. She's not. She's a Pakistani citizen, and that's the reason why the government should have the guts to stand up to the United States and say, we want our citizen back. Very interesting point. फारूक सितार साहब, क्या हमारी हुकूमत में इतना, उन्होंने कहा गट है, मैं पूछती हूँ इतना दम है कि वो कह सके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कि हमारा पाकिस्तानी सिटीजन हमें वापस चाहिए? ये सवाल मेरे लिए है? जी, आपके लिए फारूक सितार साहब। हमने कम से कम आफिया की सिस्टर फारेहा सिद्दीकी और उनकी वालदा को ये यकीन दहानी बताई है। डॉक्टर इशरत के बाद जो MQM के सबसे बड़े जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, तो वो इशरत के बाद एक अमेरिकी इंतजामिया को अपनी तरफ से खत लिख रहे हैं कि आफिया सिद्दीकी एक पाकिस्तानी शहरी है और उसको पाकिस्तान ही में अगवा किया गया था, फिर अचानक उसकी बरामदगी अफगानिस्तान की जेल से हुई और फिर उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो भी एक बड़ा संगीन मजाक है आफिया सिद्दीकी के साथ, क्योंकि उसके बाकी जो प्रेटेंशंस है, उसकी काबिलियत है, उसकी सलाहियत है, बिल्कुल पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी सफीर है और वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो अवाम और अवाम के ताल्लुकात है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, उसमें वो एक बड़ा ब्रिज है। तो वो हमारे लिए भी एसेट है, अमेरिका के लिए भी एसेट है और इंसानी जो एहतराम इंसानियत है उसको सामने रखकर, जो इंसानी हुकूक के बुनियादी उसूल है उनको सामने रखकर, और जो अदल और इंसाफ के जो अमरीकी जो निज़ाम है उनका, और हमारा एक प्रोजेक्ट, हमें इस मसले को बाकायदा हुकूमत अमरीका और अमरीकी इंतजामिया के साथ उठाना चाहिए। लेकिन सवाल फिर, थैंक यू वेरी मच फारूक सितार साहब, मगर सवाल ये है कि क्या हमारी हुकूमत में इतना दम है? टीना, you also had a chance to meet Dr. Aafia. Can you tell us something about her? Yes, I mean, Aafia is still the
extremely impressive and inspirational individual that we've come to know as she's been in the public eye. I was deeply inspired and moved by her and by the fact that despite the fact that she's been tortured and abused and her children were taken away from her, she bears no malice or hatred or she's still soft of heart, she's still very caring, she still cares more about other people than she does about herself, and she feels very much abandoned by the Pakistani leadership. Until now, none of these political leaders, not a single one has visited her. They may Could they have visited her? Of course, of course, okay. Of course. Any one of them that stands up and says, I want to see my citizen. They don't need to send some low-level person, political officer from an embassy to just say we went and sent somebody. One of these politicians that has said that they have a heart for Aafia, why haven't they gone to see her? Why haven't they come to the United States and talked about her issue? Why is it that a former senator of the United States and a former attorney general of the United States are coming here to Pakistan to talk about Aafia's case? Why are the Pakistani leaders not coming to the United States to demand her repatriation? It's not our job to make sure that the United States government gets the message that this is an important issue to the Pakistani people. It is the job of the Pakistani government to make the will of the people known, and it is very, very clear that the will of the people in Pakistan is that Aafia should be returned because of the injustice that she has suffered. I think since the Senate committee that met with her very shortly after she was imprisoned in the United States, there has been no official delegation made on Aafia's behalf. There have been no formal requests. In fact, I have written numerous times to the embassy in Washington. None of my requests for assistance in the repatriation of Aafia Siddique have ever been answered. Not a single letter has been answered. Instead, all I'm given is the response that we've sent your request to Islamabad, and that's it. And that's why I have to come to Islamabad to meet myself with these leaders that are supposedly reaching the message. And who will you be meeting in this trip? Who do you plan to meet? Meeting the Interior Minister? We hope very much that we're looking forward to meeting with the Interior Minister. Of course, he's always had an interest in this issue, and he's met with us before. Right. We are hoping, and I hope very much when I meet with him, that he will at least have a response to some of the letters that we've sent. We're also hoping to meet with the Prime Minister or his delegation. We're hoping to meet with the head of the ISI. We are hoping to meet with political leaders and parties who are influential. In terms of commitments, you'll have to ask Dr. Fauzia, who's committed so far. And I guess you've got some very difficult questions for these people. बड़ी interesting बात जीना ने ये की है, वो ये कहती है कि ये अमेरिका का काम नहीं है कि वो आकर पाकिस्तानियों को उठाए. क्या वजह है कि एक अमेरिकी सियासतदान यहाँ पे बैठे हुए हैं. आपको याद होगा कुछ दिन पहले अमेरिकी साबिक अटॉर्नी जनरल यहाँ पर मौजूद थे. उन्होंने भी ये बात की थी कि आफिया को रहा होना चाहिए. इनका काम नहीं है, ये लोग फिर भी आ रहे हैं. वो लोग जो हम में से बहुत से लोग हैं जो अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हैं, मगर क्या हमारा काम नहीं है कि हम अपने सिटीजन को उठाएं? हमें बड़ा बुरा लगा था जब रेमंड डेविस के लिए पूरी दुनिया में कोराम मच गया कि उसको छोड़ा जाए, मगर उन्होंने अपने सिटीजन का ख्याल तो किया. हमने अपने सिटीजन के लिए क्या किया? एक वक्त के बाद की पहुंचेंगे एक्सपीरियंस पर. वेलकम बैक. हम बात करें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की. बात यही हो रही है कि जब तक पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी नहीं दिखाएगी, और लगता है कि संजीदगी नहीं दिखाई गई, और अभी मेरे साथ सैट ग्रेवेल मौजूद है, उन्होंने ये बात कही कि अभी तक पाकिस्तान में इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है आफिया के बारे में, तो शायद मीडिया को भी, हमें भी ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हम क्यों नहीं सही इन्फॉर्म कर सके लोगों को. शमीरा फारूकी साहब मेरे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम शमीरा. जी वालेकुम अस्सलाम. शमीरा, मेरे साथ सैट ग्रेवेल मौजूद है, टीना फॉस्टर मौजूद है. उनका कहना यह है कि ये हमारा काम नहीं है कि हम यहाँ पर आके आप लोगों से कहें कि आप आफिया की रिहाई के लिए आवाज उठाएं. ये आप लोगों का काम है, मगर आज तक वादे के बावजूद वो खत नहीं लिखा जा सका जो आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए लिखा जाना चाहिए था. क्यों? फरिया, एक तो आपकी आवाज मुझे बहुत दूर से आ रही, बहरहाल जो थोड़ा बहुत मैं सुन सकती हूँ मैं इसका जवाब जरूर देती हूँ.
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आफिया के साथ ज्यादती हुई है, और जहां तक मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक है, हमारी कोशिश तो यही रही है कि इसको हर लेवल पे, चाहे डिप्लोमेटिकली हम इसको उठाएं या हम जो दूसरे तरीक़ेकार हैं जिसमें आफिया को जो बेहतर से बेहतर वकला हैं उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करें। आई थिंक कि नो डाउट कि कमी बेशी कहीं ना कहीं जरूर रही होगी जो अब तक आफिया की वापसी मुमकिन ना हो सकी, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि ये इसी हुकूमत की चंद काविशों का नतीजा है कि आफिया के दो बच्चे, ये बिल्कुल है शमीला साहबा, बिल्कुल सही फरमा रही हैं। ये बात सेनेटर ग्रेवेल ने अभी कही है, फौजी सिद्दीकी भी कह रही हैं कि रहमान मलिक साहब ने कमाल किया कि वो बच्चे लेकर आए हैं, मगर उन्हीं के हाथ में ये कमाल है, आप लोगों के हाथ में ही है। वो खत क्यों नहीं लिखा जब वजीर आजम साहब ने कहा था वो लिखेंगे? ये कोई स्विस कोर्ट्स को लिखने वाला खत नहीं है, ये तो आफिया सिद्दीकी की रिहाई का खत है। फरीहा, देखिए, रहमान मलिक का भी ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही है और रहमान मलिक का भी ताल्लुक इसी हुकूमत से ही है। बिल्कुल। और रहमान मलिक साहब ऑन हिज ओन उस वक्त तक कोई काम नहीं करेंगे जब तक, जाहिर बात है, पार्टी की और गवर्नमेंट की एक बाज़ाब्ता तौर पर पॉलिसी ना हो। तो जो कुछ भी उन्होंने किया, डेफिनेटली वो इन लाइन विद द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन पॉलिसी विद द पार्टी उन्होंने। एब्सोल्युटली, हम उसमें तारीफ कर रहे हैं, मगर हम कह रहे हैं वो कर सकते हैं, वो ही कर सकते हैं ये काम, उन्होंने ही करना है अगर आफिया को वापस लाना है। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पर आई विल अगेन रिपीट दिस कि शायद कोई कमी बेशी जरूर रह गई हो, क्योंकि फौजिया आफिया की बहन है, उनको भी चंद एक ग्रीवेंसेस जरूर रही हैं फॉर्मर एम्बेसडर से कि शायद उस तरीके से आफिया का केस हुकूमत पाकिस्तान ने प्लीड नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया शमीला, एक मेरे साथ ब्लेम हर, बिकॉज देखिए ये अग्री पार्टी है और जाहिरी बात है कि जिस एग्रेसिवनेस के साथ उसको उस वक्त परस्यू करना चाहिए था जब ट्रायल हो रहा था, व्हेन आफिया वाज गोइंग थ्रू ट्रायल, शायद नहीं हुआ। ये बेहतर तरीके से आपको डेफिनेटली फौजिया बता सकते। मैडम फारूकी, मैं उन्हें बताऊं कि आप क्या कह रही हैं। He wants to know what you're saying, so let me include him in this conversation. I've got Shamila Faruqi with me here, and she is saying that maybe they needed to pursue, the government or all of us needed to be more vocal when the trial was ongoing. Maybe it's a bit too late. Is that true? Oh God, no! It's not too late. It's never too late to correct an injustice. And let me tell her, she's in a key position within the party. If any one of the parties were to make this their top priority, there's no downside risk to this. When you seek justice, there's no negative. It's all positive politically. And I don't understand why politicians haven't jumped on this and provided some leadership, some guts, some courage. Now we have the Interior Minister that has brought, here, he found the kids and brought them back to their grandparents. You know, he found the kids. That wasn't an accident. He had to go do this. Why can't he use the same courage and get the backing of his party to back his moves to now press the United States aggressively? I'm not talking about just sending a letter. I mean, press the United States aggressively on this issue before the election in November. I mean, act now. Very important question. Shamila Liaquat Baloch साहब भी मेरे साथ मौजूद है, मगर शमीला, I would like to respond to this, Fareeha. For starters, what I meant was that if the government of Pakistan had pursued Afia's case more aggressively during trial, things would have been much easier to bring her back then. Now, after the pronouncement of the judgment and 86 years in prison, of course things become more complicated. But definitely, as Interior Minister Rahman Malik has made his efforts on behalf of the government of Pakistan and his party, Pakistan People's Party, I'm sure he's doing many things, in the background, which most of the things definitely don't come in the forefront. But that does not mean that efforts are not going on. Similarly, there's another thing that I would like to talk about is that I think all the political leadership in the country at this point in time, I don't think has made enough efforts to bring Aafia back. I think even opposition leader Nawaz Sharif or different political parties
say for example Imran Khan and other people, I don't think they have been so vocal. And I agree. In getting and I agree. Aafia They back. haven't. They've spoken about it, but they haven't. But the major onus is on you, on your party, because you're in the government. That's precisely my point. But then you see, when these people are so vocal on drone attacks, and they go for marches and they go for dharnas, I think if we all got together and send that message across, that would definitely make a difference. मैं लियाकत बलोच साहब आपसे ही पूछना चाहूँगी. I'll come back to you. You were smiling when she said there's something going on in the background. Yeah, first off, background doesn't count. Right. That's where cowards hang out, in the background. What we need is By courage. background, I mean behind the scenes there are many diplomatic channels. Oh, I'm very familiar we do with talk diplomatic on them. channels. Maybe all the things don't come in the forefront, and maybe all those things You judge that we have don't make headlines. With all but due that respect. definitely does not mean that we don't make enough effort. Yeah, with all due respect, background is background. We want to see physical results up front, and that result is simple: is to get Dr. Siddique repatriated to her country. She's a citizen of Pakistan, and she's unjustly in prison in the United States of America, and that's the fault of the United States of America. It can be corrected. It can be corrected by you people politically. Most of us don't speak when it is necessary to speak. And let's like you've listen been to Tina speaking as now well, when you Shamila. were the Let's listen to Tina. She has to make a point as well. I didn't hear you speaking either, but it's never too late. And It's I never think too late. all That's the what he effort said. Well, that's right, and I hope we're going to meet her in Islamabad. And he's coming to meet you as well. He said yes, Tina. I'd like to just respond to one thing. She mentioned that we should have done more during the trial, and perhaps we should have done more during the trial, and now it's too late. Well, at the time of the trial, what the Pakistani government did is take the advice of the United States and hire lawyers. And these lawyers, they paid $2 million to these lawyers who did nothing for Aafia. Aafia rejected those attorneys, and she did not get a fair trial as a result. And they said, after she was convicted and they saw how the proceedings were going, the United States said to the government of Pakistan, okay, just wait until she's convicted and all of her proceedings are over, then you'll be able to do a prisoner transfer treaty. And so the government of Pakistan waited and sat on their hands and said, well, there's nothing we can do. The US government is telling us there's no feasible way to get involved in this case. We have to wait until after she is convicted. She's now been convicted and sitting in prison, serving out this 86-year sentence, and we have been asking, what are you doing with this prisoner transfer treaty? I have never received a response. We've had lawyers in Pakistan provide all the briefings that have been asked for by the leadership here, and we haven't seen any results. So frankly, at this point, to say that they're doing something behind the scenes, whatever you're doing is not working. Very important point, Shamila Saiba. आपने सुनी उन्होंने 3 बातें की. आप लोग क्या हम लोग अमेरिका में I agree with her on one point that I think not enough has been done in the past and not enough is being done at present. But that does not mean that nothing is being done, and that definitely does not mean that we don't have the will to do more. शमीना साहबा, मेरे साथ रहिएगा. मेरे साथ लियाकत बलोच साहब बड़ी देर से लाइन पे मौजूद है. मैं उनको भी शामिल कर लूं क्योंकि आपने कहा कि अपोजिशन भी कुछ नहीं करी. लियाकत बलोच साहब धरने दें, आवाजें उठाएं, शोर मचाएं. हकीकत हाल ये है, मेरे साथ 2 सीनियर अमेरिकन सिटीजन्स मौजूद हैं. वो कह रहे हैं आपके सियासतदानों ने कुछ नहीं किया आफिया को वापस लाने के लिए. लियाकत बलोच साहब से हमारी शायद लाइन दोबारा मिलाने की कोशिश करें. जैसे मिलेगी हम बात करेंगे. दोबारा मैं आती हूँ शमीला साहब, अगर आपके सिद्दीकी की बहन की भी बात सुन लीजिए. एक बात मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आफिया की ट्रायल जो थी इट सेल्फ इलीगल थी. मतलब ये होनी नहीं चाहिए थी. मेरी जो ग्रीवेंस थी, जैसे कि शर्मिला ने कही कि पिछले एम्बेसडर से जो थी, वो ये थी कि हमने ये कहा था वो पाकिस्तानी सिटीजन है, आप उसको पाकिस्तान वापस लाओ. किस कानून के तहत? there's no extradition treaty with Pakistan. How did she end up in the US? तो ये ट्रायल तो एक based on an illegality थी. Absolutely. Oh yeah. Absolutely. Yeah, very much so. Very much so. She never should have been in the United States in the first place. She The United States illegally took अगर her. हम अपने वकील करते तो we are legitimizing an illegitimate act. तो ये बात और भी साबित होगी. वो कत्ल करके चले जाते हैं. He kills 2 people and he's
And Fareeha, I wrote to the government of Pakistan on many occasions about Raymond Davis, and there was an opportunity. And what we were told by the government of Pakistan, by this leadership, was Raymond Davis will never leave Pakistan. And so therefore, there's no point in asking for Aafia because we'll never give him up. That's exactly what they're saying now with Shakil Afridi, for example, who the United States government and the ambassador has actually said that the United States government has said, you know, that's an opportunity. We're willing to discuss that. Okay, they don't like that idea. What's their plan? My client, I have a client sitting in prison back in Texas. She wants to know, what is my government doing to help me get back home? I have no answer so far. शमीला साहिबा, आपके पास कोई जवाब है इस बात का? देखिए फरिया, मैं तो सिर्फ एक चीज समझती हूँ और कहना जरूर चाहूंगी कि देखिए इट्स नेवर टू लेट। और इस वक्त भी अगर हम एक प्रॉपर तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ अगर हम आगे चलें तो ये रिक्वेस्ट है कि आप अंग्रेजी में बात करें। आई होप यू डोंट माइंड। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर से मिली थी और एक कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर। If you could please say this in English so that my guests can understand as well. Yes, Santa Gravel wants to hear you in English if you don't know. Well, what I want to say is that I think it's never too late. And even now, if we make aggressive, coordinated efforts, I'm sure we will be able to secure her release. I don't know about the details of Fauzia's meeting with the Prime Minister, wherein, to my knowledge, is that he has made a committee to look into the matter. I'm sure the willingness is there, and I'm sure the will is there. And but Shamila, I know you personally. She's one of the politicians who do. Here, I'd like her to join us in the meeting I'm with always the Prime there. Minister. I'm always there to support Fauzia whenever she's called me. I'm just a message away. She's sitting with you. I'm sure she'll be able to tell you this herself. And I'm always there to show support. And whenever I get a chance, I do bring it up with my leadership. And the answer that I always get is a very, very positive answer. That we are best and we are making efforts. I'm organized.